What was the relation between Prophet Musa alayhi salam and Prophet Harun alayhi salam? हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता था? The options are A. Cousins, B. Brothers, C. Father and son, and D. Friends. Brothers. Yes, the answer is correct. Allah Rabbul Izzat says in the Holy Quran, فَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. And we granted him his brother Harun, also a prophet, out of our mercy. और हमने उनको अपनी रहमत से उनके भाई हारून को नबी बनाकर अता किया. The next question is, which two surahs are for seeking protection in Allah from evil eye and witchcraft? नजर बद और जादू से अल्लाह की पनाह मांगने के लिए कौन सी दो सूरतें पढ़ी जाती है? The options are A. Surah Yasin, B. Surah Falaq, C. Surah Ikhlas, and D. Surah Nas. Surah Falaq and Surah Nas. Yes, the answer is correct. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam used to seek refuge with Allah from the jinn and from the evil eye until the Mu'awwizatain, the last two chapters of the Quran, Al-Falaq and Al-Nas, were revealed, and when they were revealed, he started to recite them and not anything else. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam जिन्नों इंस की नज़र बद से बचाव की दुआ किया करते थे. जब मुअव्विज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास नाजिल हुई तो आपने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरी पनाह वाली दुआएं छोड़ दी.